ओके, कोई बात नहीं। तो हम जो इसका करेंगे, तो वैसे मैंने बोला ना इसकी ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डिंग है चैनल पे। इसी तरह से d by dt ऑफ एफ यू डॉट, अगर ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो कर्व है इट वुड बी द शॉर्टेस्ट अमंग एनी टू, मतलब एनी कर्व, एनी पाथ ऑन दिस सरफेस पासिंग थ्रू p and q। सो मान लो दो पॉइंट है जिनका नाम मैंने p and q दिया था शायद, राइट। सो अगर ऐसा है तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये जियोडेसिक इक्वेशन, मतलब if and only if it's a geodesic it would be the shortest in the sense of this कि हम डिफाइन करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स जिसको मैंने लास्ट टाइम कहा था अल्फा टाउ t, and of course you know tau is an interval जिसको हमने दिए थे लिमिट्स, क्या दिए थे, तो it was an interval belonging to minus delta delta and corresponding to tau equal to 0, I have got my own curve जिसका मैं investigate करना चाहता हूँ, और बाकी set of curves are given by different values of tau in this interval, and मेरा जो t है वो है in some interval minus epsilon epsilon, and I'm getting this path p between p and q for each tau. I'm getting a curve which joins these 2 points. अब important ये है कि P and Q ऐसे हैं दो पॉइंट्स जो हर एक पाथ पे लाई करते हैं। All these paths, all these curves on this surface pass through P and Q. तो फिर हमने ये कहा था कि हमने कहा था then of course L tau, length of each of these, any of these curves, corresponding to a tau in this interval, there would be a curve that goes from P to Q on the surface, which should be equal to A to B, the speed of that curve alpha t dt, उसका इंटीग्रल। नाउ जो हमारा थ्योरम है वो ये है, लेट मी राइट, इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि नोटेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विद द अबव नोटेशन, हमारा मतलब वही है जो हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन। द यूनिट स्पीड कर्व अल्फा, द यूनिट स्पीड कर्व अल्फा, अल्फा इज अ जियोडेसिक if and only if d by d tau of this L of tau is equal to 0 when tau is equal to 0, यानी अल्फा, जब अल्फा ये कर्व होगी जियोडेसिक वाली कर्व आएगी, then this इंटीग्रल, इसका जो it should be the critical point, either the maxima or the minima of these lengths, or different lengths of the curves passing through P and Q. Okay, for all family of curves alpha tau and ऐसी सभी families with alpha 0, यानी when tau is equal to 0, जो ना मेरी original curve है alpha जिसको मैं check करना चाहता हूँ। So this is what we have to prove. तो proof में दूसरे पेज पे ले जाऊंगा क्योंकि इसमें काफी जगह चाहिए। अब proof. Now we use the formula. अब तुम्हें याद रखना है ये जो मेरा alpha dot at t होता है, now this is equal to E u dot square plus f u dot v dot plus g v dot square, I think it's twice here, raised to power 1 by 2. You can easily evaluate it. So if I call this जो अंदर बैठा हुआ है ये स्क्वायर रूट के अंदर, if I call this now, this अगर ये tau है, मतलब this would be different for different curves on this surface पे जो different curves है ना, different alphas है, तो इसका value भी different होगा, so it would depend upon t as well as alpha, because as t varies we are moving along a single path, and as tau varies we are moving from one path to another path, we're jumping from one path to another path, not jumping smoothly, actually smoothly जा रहे हैं उसमें से। So इसका नाम हम रखेंगे, this is a function of t and tau, so इसको मैं मान लूंगा 1 by 2, and what's more
we use this formula. We use formula for so अभी मैं लिखता हूँ. We use formula for differentiating under there's a how do we differentiate under integral sign? मेरे कहने का मतलब ये है, suppose I have to differentiate an integral d by d tau जो कि मेरे पास है f अंदर है फंक्शन f t tau dt. अब देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, लेकिन जब मैं इसको a to b में जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो t तो खत्म हो जाएगा क्योंकि t को हम वैल्यू देंगे b and a. So it would be only a function of tau. Now if I'm going to differentiate it, so it's generally equal to, for smooth functions, for regular functions, it is equal to the integral of the partial derivative of this function. यानी अगर मैं पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं फिर इंटीग्रेट करूं, या पहले इंटीग्रेट करूं फिर डिफरेंशिएट करूं, द वैल्यू इज द सेम. ठीक है ना? मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इफ f tau t में लिखा है t tau whatever, tau एक वेरिएबल है, t दूसरा है, चलो tau पहले लिखेंगे हर जगह, is a smooth function. thus इसका मतलब ये है d by d tau of L of, ये पता नहीं ये टेढ़ा क्यों लिख रहा है, या तो मैंने ये बोर्ड रखा है टेढ़ा. It means that d by d tau of L of tau जो कि बराबर है d by d tau of the integral a to b length of alpha dot tau dt, which can be written as d by d tau of, जैसे कि मैंने अभी लिखा था, a to b eu dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised power 1 by 2 dt, जिसको मैं लिख सकता हूँ a to b, तो ऐसे में लिखता हूँ d by d tau, और मैं इसे लिखूंगा g t tau whole raised power 1 by 2, क्योंकि ऐसे हम शॉर्ट में, ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए, वरना बार बार हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. dt where cos g tau t, मैं गलत लिखा हूँ पहले, वो दूसरा g tau t is equal to eu dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square. But this can be then written as a to b del by del tau of gt tau whole raised power 1 by 2 dt. पर अगर इसको partially differentiate करूं with respect to tau, this would be a to b 1 by 2 into gt. अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीधे g raised power minus 1 by 2. मतलब ये just to save time, और इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी del g by del tau dt, यानी ये बराबर होगा, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको 1 by 2 into a to b g raised power minus 1 by 2 del g by del tau dt. So let's call this equation 1. Okay, now I just focus on this del g by del tau. मैं इसको evaluate करूंगा where g is this function. So let's differentiate it partially with respect to tau. Del g by del tau is del by del tau of e u dot square plus twice f u dot v dot. Okay. प्लस जी वी डॉट स्क्वायर. तो अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, सो पहले मैं ई को करूंगा ऐसे ही डेल बाय डेल यू, ओ सॉरी डेल बाय डेल ई बाय डेल टाउ इनटू यू डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस del f by del tau
u dot v dot plus del g by del tau into v dot square, और फिर e को ऐसे ही रखेंगे, e को ऐसे ही रखेंगे तो it would be e into twice u dot del u dot by del tau plus twice f ऐसे ही रहेगा, और अंदर u v dot को अगर हम with respect to tau करेंगे partially differentiate, it would be del u dot by del tau into v dot plus del v dot by del tau into u dot. Then I would have the last term, that is twice या g को ऐसे ही रखते हैं, so it would be twice v dot into del v dot by del tau. Now इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, यानी इसमें भी u dot स्क्वायर है और कहीं पर ओके ओके, अब हम ये जो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, del e by del u into del u by del tau as a chain rule, u dot square plus यहाँ twice है, हाँ twice, हाँ एक बार में, ये दो बार है तो मैं इसको दो बार अलग से लिखूंगा, यानी दो है ना ये, it's twice del f by del tau, तो what I do, मैं इसको लिखूंगा del f by del tau into u dot, देखो पहले इसको, ये लंबा सा चेन जो बनता है इसमें होती है दिक्कत। So what I do, तो ये हो गई ये वाली टर्म, फिर ये मेरा 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, e f sub u into del u by del tau into u dot v dot प्लस दूसरी बार मैं v से करूंगा, दो बार दो टर्म्स थी ना हमारे पास, इसको मैंने ब्रेक किया into 2, एक को चेन रूल के जरिए ऐसे लिखा del v by del tau u dot v dot प्लस इसी तरह से अपना g sub v into del v by del tau into v dot square, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, then I have of course twice e u dot, just a minute, मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे twice ही, ये है ना, अच्छा ये टर्म्स आ गई, जो सेकंड पार्शियल आ गई, इसका फर्स्ट आ गया, इसका फर्स्ट आ गया, इसका फर्स्ट आ गया, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, I have got del, कहाँ गया, del u by del tau, तो मैं इसको लिखूंगा twice e u dot into del u by del t del tau, राइट, इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ, मेरी बात समझ में आई, क्योंकि इट इज u डॉट इज ऑलरेडी del u by del t, तो इसको फिर टाउ के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, और हम उनको मतलब मान सकते हैं, सेम ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस गोज देयर, देन सिमिलरली आई वुड हैव ट्वाइस f into del u डॉट, मैं लिख सकता हूँ del u by del tau del t into v dot plus del v by del tau del t into v dot plus twice f twice g, the other terms, twice g into del, एक मिनट हो गया यहाँ पे, नमाज कर लिया थोड़ा सा, so you have got twice g v dot into del square v by del tau del t, तो मैंने थोड़ा सा इसको हमने ऐसे किया, तो इसको जरा अब हम इकट्ठे लाएंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब मैं दूंगा del u by del tau कहाँ पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e sub u, है ना del e by del u, so it is e sub u into del u by del tau plus e sub v into del v by del tau
यानी वो टर्म होगी मेरी, कहाँ गया मेरा ई सब वी, ई सब यू, ई सब वी भी तो कहीं था। अब कितनी टर्म, हाँ मैंने किया डेल बाई डेल्टा ई सब यू तो आ गया, ई सब वी कहाँ गया? हाँ ई सब वी मेरी टर्म, ओके यू डॉट स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, किस टर्म में? एक तो इधर है और यहाँ पे है, हाँ ई सब वी कहाँ गया? ओ नो, ये तो मैसअप हो गया थोड़ा सा, मुझे लगता है मुझे यहाँ से वापस करना चाहिए, इसीलिए इसको पहले यहीं पे चेक कर लिया हमने, ठीक किया। ओके मैंने डेल यू बाई डेल्टा किया, ठीक है, यू डॉट स्क्वायर ट्वाइस, ठीक है ठीक है। फिर मैंने ई को ऐसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, एफ को ऐसे ही रखा, इसको, ठीक है यहाँ तक तो सही है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ई सब यू into del u by del tau into u dot square, तो फिर लिखूं twice f sub u del u by del tau into u dot v dot plus g sub v into del u by del tau into v dot square plus twice e into del u by twice e u dot into del u by del tau del t plus twice f into del u by del t del tau into v dot plus del v into del tau del t u dot plus twice g into del v into del t del tau into v dot। ओके ठीक है, मैंने ठीक किया, राइट। तो मुझे बता दो u डॉट स्क्वायर किस किस में आएगा? एक तो है ई सब यू में, ई सब बी है मेरे करीब पास, ई सब बी कहाँ गया? हाँ मैंने गलत की। अब देखो ना, E इज अ फंक्शन ऑफ बोथ U एंड V, तो यहाँ पे हमने गलती की। ये निवास का भी जो प्रेशर रहता है ना इधर से, इट्स मेस्ड अप, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली ना ये लंबा एक्सप्रेशन होता है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। देखो डेल E बाई डेल्टा होगा मेरा, डेल E को अगर मैं डेल्टा के साथ करता हूँ, इट शुड बी E सब U into del U by delta plus E sub V, because ये part this is a function of two variables ही हम एक ही ले रहे थे, del V by del E sub V into del V by del tau into U dot square plus twice, इसी तरह से मुझे मिलेगा E sub U, E sub F sub U, अब सही है, F sub U into del F by del tau plus F sub V into del F by del tau whole multiplied by u dot v dot plus g sub u into del u by del tau plus g sub v into del v by del tau, अब सही, into v dot square plus twice e u dot into del u by del tau del t plus twice f into del u by del tau del t into v dot plus del v by del tau del t into u dot plus g twice v dot into del v into del tau del t, अब सही, वरना इसमें तो गड़बड़ी हो रही थी।
So then I can just it recombine it like this: EU del U by del tau plus I can just write it like this now. It can be written as EU into U dot square plus twice F into U dot V dot plus G sub U B F sub U into V dot square कंबाइन करके इट विल बी बाहर आएगा इसका डेल यू बाई डेल टर्म, यानी मेरे कहने का मतलब ये टर्म और ये टर्म मैंने कंबाइन किया, फिर मैं दूसरी वाली करूंगा इसमें ये टर्म यानी इट विल बी ई सब बी इनटू यू डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ सब बी यू डॉट वी डॉट प्लस जी सब बी वी डॉट स्क्वायर इनटू डेल वी बाई डेल टर्म। I think that's what, yes, बिल्कुल। और नेक्स्ट टर्म बचेगी जो बाकी बचा कुचा है वो आएगा ट्वाइस EU dot plus FV dot into del square U by del tau del T plus twice FU dot plus GV dot into del square V by del tau del T। अब ये ठीक है। Okay, now look at this equation first। अब इसमें मुझे ये डेल जी बाई डेल टी सब्स्टिट्यूट करना है। अब चूंकि ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है तो क्यों ना मैं पहले इस टर्म को, क्योंकि इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आई जस्ट वांट टू लुक एट कि ये टर्म उस इंटीग्रल में क्या मुझे देगी। बाद में ये सारा मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। यानी मैं लिखूंगा द contribution to the integral 1 by the terms involving second order partial derivatives, यानी ये टर्म इसमें है ना second order partial derivatives, second order partial derivatives is, और मुझे दूसरा पेज चाहिए, so let me try to write it neatly, so that would be a to b। अब अगर तुम देखोगे यहाँ 2 है और मेरे इंटीग्रल में 1/2 ऑलरेडी है, so it should be integral g raised to power minus 1/2 e u dot plus f v dot into del square u del tau del t plus then I have f u dot, second partial derivative, उनका contribution ये होगा del square v by del tau del t cos t। Now what I do here, I apply integration by parts and take this as my first function and this as my second function। So that means what I do, applying integration by parts, तो इसको अगर मैं ऐसे ही रखूं, right, e u dot plus f v dot, और इसको मैं इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, so it should be ये दूसरी टर्म, it is just del u by del tau, right। इसी तरह से इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं, यानी I can write g raised to power minus 1/2 into e f u dot plus g v dot, okay, or whole multiplied by del v by del tau, and I evaluate from t equal to a to t equal to b। देन माइनस क्या होगा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा इस फंक्शन को, राइट, इसको ऐसे ही रखूंगा del u by del tau को, del u by del tau को ऐसे ही रखा, जिसको हमने इंटीग्रेट किया और इसको डिफरेंशिएट कर, इट शुड बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय del by del t of g minus 1/2 eu dot plus fv dot। इस तरह से इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, del u by del tau को ऐसे ही रखा, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रखा, यानी del v by del tau into del by del t of fu dot plus gv dot, right।
ऑफ कोर्स यहाँ पर साथ में g raised power -1/2 भी है, यू अंडरस्टैंड दैट। और ऑफ कोर्स इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम a to b, थोड़ा सा लंबा चौड़ा। now what I see is this, अब ये जो अगर ये जो u एंड v है, तो हमारा नेक्स्ट चीज ये होगी, नाउ सिंस alpha dot tau at a and alpha tau at b are independent of tau, मेरे कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ टाउ, कोई भी टाउ हो एंड पॉइंट्स पे उनका वैल्यू सेम, यानी पी एंड क्यू वो चेंज नहीं होता, यानी टाउ कुछ भी हो ये दे आर इंडिपेंडेंट, बीइंग इक्वल टू बोथ टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि डेल अल्फा टाउ बाय डेल टाउ is equal to 0 when t is equal to a or t is equal to b. But this implies now del alpha tau, because it lies on the surface, by del tau would be equal to del u by del tau r sub u plus del v by del tau into r sub v, because alpha at t, alpha at tau is also r at t or tau, whatever, because it lies on the surface, it must satisfy that. So chain rule के हिसाब से it should be rv, और अगर ये 0 है, which implies that del u by del tau is equal to 0 is equal to del v by del tau when t is equal to a or t is equal to b. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो therefore the जो स्केलर्स हैं उनका भी 0 होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि पॉइंट इज रेगुलर। सो इसका मतलब ये जो है, ये जो मेरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो जो सेकंड पार्शियल्स कंट्रीब्यूट करेंगे वो खाली ये होगा माइनस दिस टर्म, राइट। और बाकी बचा कुचा क्या है? बाकी है हमारे ये टर्म्स जिनमें ओनली फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो अगर मैं अब सब्स्टिट्यूट बैक करूंगा इन इंटीग्रल 1, राइट, तो मुझे एक तो ये दो टर्म्स करनी है, और ये जो यहाँ पे बचा ये नेगेटिव वाली टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी I should get this thing. So therefore, substituting the value of del g by del tau in equation first, we get, थोड़ा ये और ज्यादा लंबा चौड़ा है, should I write it down सारे का सारा, so ये तुमको भी चेक करना थोड़ा सा, यानी थोड़ी लंबी इक्वेशन बनेगी, it will be del by del tau of L tau is equal to integral b to a to b 1 by 2 e sub u dot square plus twice f sub u dot v dot plus g sub u v dot square into del u by del tau to g tau t whole raised power -1 by 2 plus 1 by 2 e sub v u dot square plus twice f sub v u dot v dot plus g sub v dot square into del v by del tau into g tau t whole raised power -1 by 2, और ये तो खैर सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव, और दूसरा कंट्रीब्यूशन है इसका जो हमने अभी किया, यानी del by del t of g raised power -1 by 2, पूरा g tau t raised power -1 by 2 into e sub u dot plus f sub v dot into del u by del tau.
minus del by del t of g tau t raised power minus 1 by 2 into fu dot plus gv dot, okay, into ये तो पूरे का इंटीग्रल है होल मल्टीप्लाइड बाय del v by del tau, और ऑफ कोर्स ये सारा कुछ इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू t. सो दिस इज व्हाट आई गेट. ठीक है, सो जिसको मैं लिख सकता हूं अब a p, just to make things easier, u into del u by del tau plus v into del v by del tau into dt. ठीक है, so this is what I have. वायर अब u होगा जो del u by del tau के साथ है, यानी ये टर्म और v होगा दिस टर्म और दिस टर्म, यानी वायर u is equal to 1 by 2 into e u dot square plus twice f sub u, e sub u है, f sub u dot v dot plus g sub u v dot square whole multiplied by g raised power minus 1 by 2 plus del by del t of g raised power minus 1 by 2 into eu dot plus fv dot. Now this thing is multiplied by del v by del t. थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, but bear with me. नहीं वो तो हमने बाहर निकाला था, बस इतना ही, बिल्कुल सही. हाँ, एक ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पे साइन होना चाहिए माइनस, और v जो है वो है 1 by 2 e sub v u dot square plus twice f sub v, which we can recognize that this has to be the geodesic equation. Lekin except for this g raised power minus 1 by 2. So it is del by del t of g raised power minus 1 by 2 fu dot plus g dot. बिल्कुल सही. हाँ, बिल्कुल. So this is what I get. Now since मैं ऐसे करूँगा, alpha 0, which is my original curve alpha, is unit speed. So at tau equal to 0, g is actually the speed of the curve, उसका square root. So g should be equal to 1, right? And comparing, अगर मैं इसको compare करूँ, comparing this set of equations, let's call it second, comparing second with geodesic equations, taking g equal to 1, we get different geodesic equations. We see that alpha is a geodesic, unit speed geodesic. Yeah, I should say if alpha is a geodesic, then it will satisfy geodesic equation, which means that u must be equal to 0, v must be equal to 0, and v must be equal to 0 when tau is equal to 0. Hence, if alpha अगर geodesic है, so del by del tau into L T tau would be equal to 0. क्योंकि अगर u भी 0 है, v भी 0 है, तो we are integrating 0, so therefore we get 0. Actually important है इसका converse, कि अगर ये 0 है, then alpha must satisfy the geodesic equation. यानी हमें दिखाना है अगर ये 0 है, तो u and v 0 हो जाएगा. Right? Now let's continue. Conversely, suppose that integral a to b u del u by del tau plus v del v by del tau dt is equal to 0 when tau is equal to 0, and call this equation third. So for all families of curves alpha tau, then
then अगर ये 0 है, then u must be equal to v must be equal to 0. एक मिनट, हाँ, we show that, actually we have to show that, we show that then u must be equal to v must, both must be 0 when tau is equal to 0. बस इतना ही हमें चाहिए. Since this will prove that, which will prove that alpha is a geodesic. Okay, because it would satisfy u equal to v equal to 0 means geodesic equations are satisfied, तो आपका geodesic हो जाएगा. Now assume that u is not equal to 0 when tau is equal to 0. मान लो ऐसा नहीं है, तो हम दिखाएंगे then we will get a contradiction, right? Now then there exists some t naught belonging to AP such that u 0 t naught जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि tau मतलब u is a function of tau and t, मैं कह रहा हूँ when tau is 0 it is not equal to 0, यानी फिर कोई t naught होगा हमारे इंटरवल में जहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं a to b में such that this is non zero. तो अब अगर 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ ये पॉजिटिव है for some t naught, अब हम वही यूज करेंगे since u is a continuous function because it is some combination of e's and f's which are differentiable and hence continuous. It's a continuous function, so I can find an interval जहाँ पर ये positive है. So there would exist some eta positive such that u0t is positive for all t belonging to t naught minus eta t naught plus eta. But this is स्टैंडर्ड. क्या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो एक इंटरवल पे पॉजिटिव, ये छोटे से इंटरवल पे उस पॉइंट पे. ओके, नाउ लेट phi be a smooth function, differentiable function such that find a smooth function such that phi of t जो है it is positive if t belongs to this interval जो हमने अभी किया t naught minus eta t naught plus eta, and this is equal to 0 if t does not belong to this interval. हमने एक ऐसी फंक्शन डिफाइन की जो इस पे पॉजिटिव है, मतलब जनरल ऐसी फंक्शन डिफाइन हो सकती है जो एक इंटरवल में पॉजिटिव है, दूसरे पे नहीं है. नाउ सपोज दैट alpha at t is equal to, of course it lies on the surface, RUH